Hello students of Standard 11 Learning Economics Chapter 5 Cost of Production and Cost of Revenue Session 4. Topics of the session today are average cost and marginal cost. So to begin this session, the first thing that we are going to know about is average cost. Average cost is also known as average total cost. Average cost is cost per unit of production. Generally, whatever the total cost arrives after the combination of the variable cost and the fixed cost, while the expenses that is being incurred in the production, total cost of that product arises. And when an individual unit price is being considered, that is considered as average cost, that is per unit production cost. Average cost is found by dividing total cost by unit of production. So how we find the average cost? The total costs that have arrived while producing the goods and the total unit that have been produced will be divided by total cost by total unit that have produced. We will get per unit cost out of that. Total cost is a sum of total fixed cost and total variable cost. Therefore, total fixed cost plus total variable cost is divided by production unit, we get average cost. What can we do? या तो हम टोटल कॉस्ट फाइंड कर ले, जिसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जितना भी हमने स्पेंड किया है और उसके साथ साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उनको हम ऐड ऑन करेंगे, सम अप करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा. तो हम टोटल कॉस्ट को अगर टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे तो भी हमें पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा. और अगर हम टोटल कॉस्ट फाइंड नहीं कर रहे हैं तो भी हम कैसे कर सकते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी हम टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन जितना किया है उससे डिवाइड कर सकते हैं, तो भी हमें पर यूनिट का कॉस्ट और वो भी सेम आंसर के साथ मिल जाएगा. लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ इट. एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट बाय टोटल प्रोडक्शन, दैट इज यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन हुआ हो वो, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट finds us about the average cost. And this is how the total production of unit is being found. Average cost equals to, it has been indicated as such, so AC equals to TC by TP, in which AC is average cost and TC is total cost and TP is total production. This is how the actual cost of production, the actual cost of per unit is being easily found up. So we can also see it with the help of a schedule, production in unit, where production in unit is been given, the total cost that incurred in the production of that particular unit has been also specified, and the average cost is also specified. As the level of output increases, the total cost rises. The number of output that will keep on increasing, the number of output, the production of output is increasing, so the expenses incurred while producing all such goods will also rise. But initially the average cost falls, then remains constant and subsequently rises. We have learned about average cost previously too.
that when it comes to initial stage, average cost always falls, because as we said that per unit when added to a particular production process, so many things are there, so many resources and variations are there within which we can adjust the production. So the initial stage when it starts, the cost of production is quite lower, the average production cost is quite lower, but at a minimum stage when it raises, and after that when the additional unit is being added, the cost of production, the average production cost always rises. Let's see over here production in unit. When one unit was produced, the total cost was ₹9 and average cost was also ₹9, क्योंकि एक यूनिट ही प्रोड्यूस हुआ है, उसमें जितना खर्चा हुआ है, जब आप टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से प्रोड्यूस करोगे तो आपका सेम एवरेज कॉस्ट आएगा. बट व्हेन द यूनिट वाज प्रोड्यूस्ड टू 2, द टोटल कॉस्ट वाज ₹16, सो द एवरेज कॉस्ट बिकम 8 पर amount of money was spent to produce each unit. When it came to 3, 21 rupees, so the average cost was 7. When 4 units were produced, 28 rupees cost were paid for the unit that was in the production, so the average cost was 7. But now from the 5th unit, the cost of production have raised and the total cost raised to 40 rupees, so the average cost came to 8. When 6 units were produced, it was 54, so 9 rupees per unit cost was there. And when it came to 7th unit, it is 70 rupees the cost that have been spent, so the average cost, the per unit cost is ₹10. So this is how it keeps on increasing with the time. If such a trend of average cost is plotted, the following diagram is obtained. So in the next slide we can see about the diagram that have been specified, and all the changes, all the variation that is occurring can be seen in that very particularly. So here is a diagram of average total cost. In diagram 5.6, on x-axis output and y-axis average cost, and that is average cost curve is shown in the beginning with the increase in output. So as soon as the output is decreasing, the curve that is moving around is how it have started from its left moving towards downward, but slowly it will again move upwards to the right. Average cost decrease after some units of production, increase in average variable cost is more in comparison to decrease in average fixed cost, and due to that total cost increases and average cost curve becomes U-shaped. In short, initially with an increase in production, the average cost decreases, then at a particular level of production it is minimum, but after that it increases with an increase in production. फाइन, बहुत सिंपल और बहुत सिमिलर है कि जब प्रोडक्शन शुरू हो रहा है इनिशियल स्टेज में, फाइन, बहुत सारे हमें एक चीज़ जो क्लियर पता है वो ये होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट आप चाहे 1 यूनिट बनाओ चाहे आप 10 यूनिट्स बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट में कभी कोई वेरिएशंस आते नहीं हैं. जितने भी वेरिएशंस देखने को आते हैं वो होते हैं वेरिएबल कॉस्ट में. तो जब भी वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट के साथ वेरी करता है, चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें एक्सपेंसेस जो है टोटल कॉस्ट में पुट ऑन करने होते हैं, जिसके वजह से एवरेज कॉस्ट भी वैसा हो जाता है. बट हो क्या रहा है इनिशियल स्टेज में कि जब भी एक एक यूनिट इंक्रीज होता जाता है तो वहाँ पर फ़र्क क्या पड़ता है कि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स है, लेबर कॉस्टेज है, फिर हमारे मशीनरी कॉस्ट है, या कुछ भी ऐसे बेसिक कॉस्ट हम कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज पर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं. तो हम जितने भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो डिक्रीजिंग मोड में जा रहे होते हैं. क्या डिक्रीजिंग मोड में? यूनिट नहीं, प्राइस डिक्रीजिंग मोड में जा रहे होते हैं. तो ये डाउनवर्ड स्लोप कर रहा होता है लेफ़्ट से.
क्योंकि कम प्राइस में भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, पर एक स्टेबल स्टेज आने के बाद, एक मिनिमम आउटपुट ग्रो होने के बाद वापस जब एडिशनल प्रोडक्शन होता जाता है तो इसके प्राइसेस इंक्रीज होते जाते हैं, तो ये वापस राइटवर्ड्स अपवर्ड्स जाने लगता है। तो जब ये शेप बनता है, ये एक यू शेप क्रिएट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि किस तरह से इनिशियली ये डिक्रीजिंग मोड में और एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचने के बाद इंक्रीजिंग मोड में एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते हैं प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ साथ। देयरफॉर एवरेज कॉस्ट कर्व बिकम्स यू शेप्ड। तो दिस इज हाउ इट क्रिएट्स एन यू शेप इन द full movement of the shape, full movement of the production according to the price that is being incurring while production. The next thing that we'll come to know is marginal cost. Let's start with its meaning. We know that if production is increased, the cost of production also increases with the increase or decrease of one unit in total production. Whatever change takes place in total cost is known as marginal cost. So when it comes to marginal cost, it is very clear with the concept that as soon as the increase in production, increase in the unit of production raise, the cost of production will definitely will get increased. And when there is change, there is increase or decrease in a single unit from the total production, कि हमने मान लो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, उसका एक कॉस्ट अराइज हुआ, वो उसका टोटल कॉस्ट था, बट जैसे ही हमने 11th यूनिट प्रोड्यूस किया, जो कॉस्ट रेज हुआ और वो हमारे टोटल कॉस्ट में एड ऑन हुआ, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मार्जिनल कॉस्ट. सो in short, marginal cost is the change in total cost when an additional unit of output is produced. So marginal cost is the additional unit cost, कि हमने जो भी टोटल प्रोडक्शन किया था उसमें अब हम जब कोई भी एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी एडिशनल यूनिट आउटपुट हो रहा है, उसमें जो भी एक्सपेंसेस हमने क्रिएट किए हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, द कॉस्ट दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट. Let us also see it with the help of formula and examples. By the differences of n units of production cost and n minus 1 units of production cost, we find out marginal cost. क्योंकि n number of units तो हमने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर दिए, उसमें से जब हम अब एक एडिशनल यूनिट बना रहे हैं तो टोटल कॉस्ट में से जब वो सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो हमने एडिशनल किया है उसको जब हम रिमूव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी विच वॉज प्रोड्यूस्ड additional. So how is it been represented? The marginal cost of n number equals to the total cost of n, that is number of unit or number of commodity, minus total cost of n minus 1. ये n minus 1 क्या है, additional unit. So n is number of unit. MCN is considered as marginal cost of n units of output. TCN is total cost of n units of output and TC इक्वल्स टू इन ब्रैकेट n माइनस 1 जो है दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. जो एडिशनल यूनिट है उसको हम स्पेसिफाई यहाँ पर कर रहे हैं. लेट ऑल्सो सी इट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ और द वॉल्यूम ऑफ n दैट इज इक्वल्स टू 3 इन फॉर्मूला. वी गेट MC3 इक्वल्स टू TC3 दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स इज बिंग स्पेसिफाइड माइनस TC is 3 minus 1. So TCZ equals to 3 minus TC2, where TC3 equals to 21 and TC2 equals to 16. तो हमने 21 minus 16 किया तो हमें क्या मिला, 5 rupees is our marginal cost. The table shows that marginal cost of third unit is the difference of third and second unit of total cost. मतलब हम जब दो टोटल कॉस्ट मिलाते हैं तो 2 यूनिट जब तक हमने प्रोड्यूस किए थे वी इनकर्ड 16 रुपीज़. जैसे ही थर्ड यूनिट हमने प्रोड्यूस किया सिर्फ 5 रुपीज़ उस पर एडिशनल लगा तो हमारा टोटल कॉस्ट बन गया 21 रुपीज़. तो बट थर्ड यूनिट का जो एक्चुअल कॉस्ट था, जो एडिशनल यूनिट का कॉस्ट था, दैट वाज ₹5. तो दिस इज़ हाउ इट इज़ बिंग क्रिएटेड, दिस इज़ हाउ इट इज़ बिंग शोड in the marginal cost.
This should be kept in mind that marginal cost is independent of fixed cost. It is independent क्योंकि हम फिक्स्ड कॉस्ट में इसे मेजरली इंक्लूड नहीं कर पाते, क्योंकि हम टोटल कॉस्ट में इसको कंसिडर कर देते हैं कि टोटल कॉस्ट में जब एडिशनल यूनिट ऐड ऑन होता है तो जो वेरिएबल कॉस्ट उसमें इनकर्ड होता है हम उसके अकॉर्डिंगली ही इसका कॉस्ट जो है मेजरली कंसिडर करते हैं. Therefore, it can be said that marginal cost is the result of change in variable cost when production decrease from n and goes to n minus 1. Then increase in the total variable cost is equal to marginal cost with the change in production of output. Marginal cost is equal to the total cost. So, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है, हम क्या करते हैं कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल का या मान लो लेबर के चार्जेस लगे होंगे ऐसा कोई भी, तो वो हम कॉस्ट इनकर करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं अपने टोटल कॉस्ट में ऐड ऑन कर देते हैं, और जो उस टोटल कॉस्ट से हमारा जो वैल्यू निकलता है उसे भी हम मार्जिनल कॉस्ट में इनकर कर सकते हैं. अदरवाइज़ जो भी वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंसेस हम उसमें बता रहे होते हैं, वही हमारे एडिशनल मार्जिनल जो कॉस्ट होते हैं उसमें हम कंसिडर करते हैं. लेट अस गेट मोर क्लियर बाय लुकिंग इट इनटू द टेबल विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड हियर. Table has been showed where production in unit is been given, total cost in rupees is specified and marginal cost in rupees is also specified. So from the table it is known that till increase in third unit marginal cost is decreasing. अब किस तरह से डिक्रीज हो रहा है, जब हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया टोटल कॉस्ट 9 था तो मार्जिनल कॉस्ट भी 9 ही रहेगा. फाइन. जब हमने सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस किया वी इनकर्ड 16 रुपीज़ एज एडिशनल कॉस्ट. पर हम क्या यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि फर्स्ट यूनिट को बनाने में 9 रुपीज़ तो खर्चा हुआ, तो मतलब एक यूनिट का खर्चा उस वक्त 9 रुपये तो थे ही, 9 रुपीज़ तो हमने एनी हाउ स्पेंड किए ही. जब सेकेंड यूनिट हमने प्रोड्यूस किया तो हमने एक्स्ट्रा में कितने पे किए हैं, ओनली 7 रुपीज़. दैट इज़ आवर मार्जिनल कॉस्ट, कि हमने सिर्फ 7 रुपीज़ नेक्स्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने में स्पेंड किए हैं. जब हमने थर्ड यूनिट प्रोड्यूस किया तो द टोटल कॉस्ट वी स्पेंड वॉज 21. सो द मार्जिनल कॉस्ट इज़ 5 रुपीज़. क्यों? क्योंकि 2 यूनिट प्रोड्यूस करने तक 16 हुआ था, अब हमने एक्स्ट्रा सिर्फ 5 रुपीज़ ही स्पेंड किया, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट ओनली 5 रुपीज़ है. बट फोर्थ यूनिट से ये वापस इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि फोर्थ यूनिट जब हमने प्रोड्यूस किया वी स्पेंड 28 रुपीज़ एज टोटल कॉस्ट, पर थर्ड यूनिट तक 21 रुपीज़ ही स्पेंड कर रहे थे. तो अब फोर्थ यूनिट का हमने जब प्रोडक्शन किया तो हमने 7 रुपीज़ उसके लिए पे किए. दिस इज़ हाउ इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और इसी तरह से इसका बिहेवियर जो है हमें समझ में आता है. At the third unit, marginal cost is minimum. After that, there is a continuous increase in marginal cost. किस तरह से? क्योंकि फोर्थ यूनिट में 7 रुपीज़ मार्जिनल कॉस्ट है, फिफ्थ यूनिट में 12 रुपीज़, सिक्स्थ यूनिट में 14 एंड सेवेंथ में 16. तो ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है. दिस कैन बी ऑल्सो सीन इन द बिहेवियर दैट इज शोन इन द डायग्राम itself. As shown in the diagram, in the beginning marginal cost decreases as total average cost decreases initially. Average cost हमेशा decreasing mode में फर्स्ट स्टेज में आ ही रहा है, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट इस तरह से है, तो ये लेफ्ट टू राइटवर्ड मूव हो रहा है, पर डाउनवर्ड्स मूव हो रहा है और डिक्रीजिंग मोड में. जैसे ही फोर्थ यूनिट पे ये पहुंच रहा है ये वापस राइटवर्ड्स की तरफ अपवर्ड मूव होता जा रहा है कंटिन्यू. क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेज पे पहुंचने के बाद जब ये डिमिनिशिंग रेट में है वापस इंक्रीजिंग रेट पे ये पहुंच जाएगा. Because after some time there is increase, because initially with increase in production total variable cost increases. क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है. शुरू में क्या हुआ था, डिमिनिशिंग रेट में, बट एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद आफ्टर सम पॉइंट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट. ये इसका नेचर है कि एक टाइम तक तो ये जो है डाउनवर्ड स्लोप कर रहा होगा, बट कुछ टाइम बाद ये वापस अपवर्ड्स मूव करना शुरू कर देता है. दिस इज़ हाउ it is being shown, it is being represented as. Due to that, initially with the increase in production marginal cost decreases and after some point it increases. Fine. तो जनरली क्या होता है, जब एट इनिशियल स्टेज होता है, जब हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो ये क्या करता है, जो भी मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है.
बट एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद वापस ये हर यूनिट पे पर यूनिट पे इंक्रीज कंटिन्यू होता रहता है. इन द डायग्राम मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज़ लाइक हॉकी स्टिक. फाइन. मतलब जब हमने एवरेज कॉस्ट की बात की वो यू शेप क्रिएट कर रहा था, बट व्हेन इट कम्स टू मार्जिनल कॉस्ट ये एक हॉकी स्टिक, क्योंकि ये एक स्टेज पे आता है बहुत डाउनवर्ड जाके बहुत पीक पे वापस पहुंच जाता है, क्योंकि हम पर यूनिट देख रहे होते हैं. वहाँ पर तो हम क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हम निकालते हैं, उसमें से जितना भी प्रोडक्शन हुआ है यूनिट्स का उसे हम कर देते हैं. बट यहाँ पर हम पर यूनिट कॉस्ट जो है इनिशिएट करते जा रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट से सेकेंड यूनिट में जब हमने प्रोडक्शन किया तो कितना वेरिएशन उस आउटपुट को, कितना कॉस्ट उस पर्टिकुलर आउटपुट को प्रोड्यूस करने पे हमने स्पेंड किया. Till the third unit, marginal cost is decreasing. Therefore, marginal cost curve has negative slope after the third unit with the increase in production. Marginal cost increases. Therefore, marginal cost curve have positive slope. It is positive because initially it decreases and have a negative slope, but after a particular moment of time, that is shown here with after the third unit, that the marginal cost is increasing and forming a positive slope, because with the production of each and every unit, the cost of production, the average cost of production is increasing. This is how the average cost and the marginal cost vary from each other. Thank you.